Hello friends, welcome to PRATHAM Test Prep and welcome to another episode of Daily News Analysis that we do from Monday to Friday. So my name is Ashish Bhargav. So in newspaper analysis mainly discuss about we covered all major newspaper, different website, government website, PIB which is Press Information Bureau. And apart from that, we also discuss about the Hindu and Indian Express. And newspaper is very essential for the anyone who could be a law-abiding citizen, anyone who is preparing for the exam, because that makes you very aware ki what is happening around you, right? And in newspaper analysis, we discuss about all the important aspect of the newspaper, like we cover national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, person in news, summits and conference, miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, which is very important, especially for the law entrance exam. Like we discuss about all the amendments, all the bills and all. So this is very important for any student who are preparing for the exam. Here is quote of the day. If your voice is high, only a few people will hear. If a thought is high, then many people will listen. And to inculcate the thought process, you have to develop the temperament to read the newspaper. So every day may not be good, but there is something good in every day. And one more thing you always keep in mind, if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And just one small positive thought in the morning that can change your whole day, that is quote of Dalai Lama. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And we have taken initiative questions of the day. So at the end of the session, we'll ask you 5 questions, which is very important. That gives you immense idea like what kind of questions that can be framed from the newspaper. Because as we know that gathering information about any subject and solving MCQ, multiple choice question, they are two or different things. Sometimes you gathered all the information about the topic, but you are unable to solve the questions because you trap such kind of dilemma whether the A option would be correct answer, B option would be correct answer, or whether D would be correct answer. And that time in the examination hall, many of the students do the same mistake. It shows that lack of revision, right? So that's why the 5 MCQ on a daily basis. So if you will solve it, so you will develop a kind of confidence that yes, I can do this. Here is first article is Vostro account and how they facilitate trade. Vostro का मतलब क्या होता है? Vostro which means your and ours. Vostro actual Latin word. So Vostro which means your and ours. So Vostro account जो है, that is an account that domestic bank holds for foreign banks in the former domestic currency. In our case, our currency name is rupee. So domestic banks use it to provide international banking service to their clients who have global banking needs. And it is kind of, we can say, integral offshoot of correspondent banking that entails a bank to facilitate wire transfer. And why this one is the news? These things that we need to understand why this one is the news. So there are many reasons for that. We can say is first, last week the government of India, just a second. Yeah. So last week we can say government officials informed that 20 Russian banks, including Rose Bank, Tinkoff Bank, Credit Bank of Moscow, have opened the special rupee Vostro account which is called SRVA. So देखो, दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड होती है तो आपको इसमें एक स्वाइप अग्रीमेंट देखा होगा, स्वाइप अग्रीमेंट, राइट? सिमिलरली ये भी एक हमारा काम करता है जब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो वोस्ट्रो अकाउंट होता है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि वोस्ट्रो अकाउंट जो होता है दैट इज अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स करती है फॉरेन बैंक्स के लिए इन द फॉर्मर डोमेस्टिक करेंसी में, ठीक है, ट्रेड के लिए. एंड मोर थिंग वी कैन से द लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्फॉर्म ने किया 20 रशियन बैंक्स के लिए उन्होंने SRVA को अरेंजमेंट की. SRVA विच मीन्स स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट. सो अब वोस्ट्रो अकाउंट जिसमें आपको मैंने बता दी इन्फॉर्मेशन. सो वी कैन से दैट SRVA एक एडिशनल अरेंजमेंट है टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट यूजेस freely convertible currencies and work on the complementary system. जैसे for prospectively, for example, if you talk about like
freely convertible currencies refer to currencies permitted by rules and regulations of the concerned country to be converted to, a major reserve currency like US dollar or pound sterling, and for which a fairly active market exists for dealing against major currency. So how does it function? कैसे काम करता है ये? So we can say that the framework entails three important components, namely पहला होता है हमारा invoice exchange rate, and second one we can say settlement. So sorry. So what is the eligibility criteria for the bank? Bank from partner countries are required to approach an unauthorized domestic bank dealer bank for operating the SRVA, which is known to be a special रुपी वस्त्रो अकाउंट. अभी रिसेंटली 9 बैंक्स को भी परमिशन दी हुई थी आरबीआई ने. ये वस्त्रो अकाउंट की परमिशन कौन देता है हमारे कंट्री में? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो बैंक्स फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अप्रोच एन ऑथराइज्ड डोमेस्टिक डीलर बैंक टू ओपनिंग एसआरवीए. And domestic bank would then seek approval from the apex bank regulator. Like in our country, the top bank regulator is RBI, Reserve Bank of India. So it would be the responsibility of the domestic banks to ensure that the correspondent bank is not from a country mentioned in the updated Financial Action Task Force, which is known to be a FATF. So FATF, as we know that FATF is a watchdog for to reduce the terrorism, right? So if that country have not a good relation, then RBI cannot allow you for the open the Vostro account. So what is the main purpose of Vostro account? Purpose is quite similar. We can say as an economic survey 2022 and 2023 had argued that the framework could largely reduce the net demand for foreign exchange, NDFE, in the US dollar, in particular for the settlement of current account related trade flow. So the Indian exporters could get advance payment in INR from overseas client in the long term promote Indian rupees as an international currency once the rupee settlement mechanism traction, that is the argue in the economic survey. So as per the BIS, which means Bureau of International Settlement, right, central bank survey is also say that US dollar was the most dominant vehicle currency, accounting for 88% for the trade. That's why we can say that the 88% of the world trade that is based on dollars. So INR, Indian rupees, that is accounted only 1.6%. So we can say that only the international trade that we are dealing with the Indian currency is only 1.6%, while in another case we can say the dollar is dominating somewhere in the market, is 88% of trade that is held with the help of dollars. That's why we can say the two term in economy, that is one is depreciation and devaluation, and that's why we can see that the money value is degrading just because of depreciation, right? So this is the nitty-gritty of the subject. We need to understand it. I hope this one is clear for each and everyone. Now we move to the second one, that is a plug leakage. This is we can say malpractices under MG Narega. So what is MG Narega? Is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. The first thing we have to think about कि होता क्या है MG Narega. MG Narega is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Employment Guarantee Act, that is called MG Narega. So MG Narega basically we can say that इसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है, तो MG Narega basically providing the job for the, we can say, rural economy, and we can say this is for the unskilled worker. Make sure this is not for the skilled workers. That means MG Narega is a kind of a scheme that has launched by the government of India, and उसमें हम जो workers होते हैं, unskilled workers होते हैं, including women also, हम उसको job provide करते हैं, right? So the prima facie, the basic part is that it is hard to find fault with the government order to make all payment the Mahatma Gandhi National Rural
Employment Guarantee Act. This is all the beneficiaries via Aadhaar linked bank account is also record the presence of workers through the mobile phone application. इससे क्या होता है कि जो लेबर क्लास होते हैं, इसको मेन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि जो लेबर क्लास हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड इन आवर कंट्री, ठीक है. तो उनके कितने पैसे आए उनके अकाउंट में, उनकी इन्फॉर्मेशन उनके फ़ोन पे कैसे मिलेगी, आपने कितने दिन काम किया, दे आर नॉट एबल टू रीड द इन्फॉर्मेशन, राइट. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट लाइक नॉट एग्जैक्टली जितने भी लेबर होते हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, बट अराउंड मेजर चंक्स ऑफ द लेबर जो है हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं. एजुकेशन इज द मेन पिलर्स, right. So the issue that we can say, however, that can be addressed by giving adequate time to workers to get their account seeded with Aadhaar. So if अगर उसके account आधार से linked होंगे, which they in any case would need to do sooner or later, जैसे उसके account में पैसे आएंगे तो उसका आधार उसके फ़ोन पे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी कि that's some kind of amount that has to be credited. Now यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या है? That is the rampant corruptions in the implementation of flagship poverty alleviation program that cannot be allowed to continue unchecked. बहुत सारे स्टडीज़ में ये चीज़ें बताई गई हैं, लाइक इवन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी अटैच टू द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैव परफॉर्म द MG नरेगा इज रिडल्ड विथ माल प्रैक्टिस लाइक फेक जॉब कार्ड्स, वाइड स्प्रेड करप्शंस, लेट अपलोडिंग ऑफ मस्टर रोल्स ऑफ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड मटीरियल्स. उसके रीज़न क्या है कि जो आपके डिजिटलाइजेशन है वो गवर्नमेंट ने उनको कर दिया, बट वो क्या है बहुत सारे लेबर्स के आधार कार्ड नहीं है, दे आर माइग्रेंट लेबर्स. अगर वो और जो पार्लियामेंट्री के स्टैंडिंग कमेटी है और MG नरेगा कंट्रोल कौन करता है हमारे कंट्री में, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को आपको इसके ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा. वी जस्ट नीड टू स्किल फॉर जो आपके अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको इतनी ट्रेनिंग देनी होगी सो दैट कि दे कैन एबल टू रीड द इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट इन द सेल फोन एंड ऑल. So many standing committee and report that is against the MG Narega, that was a widespread corruptions, and we can say that was a rampant corruption in the implementation of this scheme. So what is not often not appreciated in the MG Narega is a regular employment generation program, but it is only a fallback mechanism for those who cannot find any other job. So MG Narega, which was launched in somewhere in 2005, makes it amply clear that it is a demand-driven scheme to guarantee 100 days of unskilled worker work per year. It means that ये आपको 100 days की employment scheme देता है, ठीक है, out of 365 days. So regrettably, the potential of MG Narega to create durable assets in rural areas, and why government are focusing on the rural areas, because if the rural economy has to be strengthened, it will impact on the panchayat economy. If the panchayat economy would be strengthened, their impact would be on the district economy. District economy would be strengthened, and their impact on the state economy. If our state would be like in the prosperous state, that directly impact on our country, which is India. So these chain need to be understand how the government is thinking about. As we know that if you talk about the British time, our rural economy that was completely ruined. And why it was so? Because the handicraft industry that was ruined in the time of British era. So these things, that's why government want wish to promote that MG Narega, so that all the unskilled labor can work at least 100 days. Now moving to the next one. Well, India witnessed an El Nino forecast this year. This is some kind of geographical term, El Nino. So El Nino and La Nina. So what exactly is El Nino is? So El Nino, we can say, refers of a band of warm water spreading from west to east direction. So El Nino is from the kind of warm water that is spreading from west to east direction in the equatorial Pacific Ocean. This is, I can see you in the diagram. Wait, this one. Here is El Nino. The coast of Peru is somewhere in the part of Australia. So the warm air is moving towards the western to eastern part of the country. So that parts will have the evidence, and we can say the heavy rain because of El Nino. If there is a La Nina, so that we can say there is a drought condition. We first understand that what is the importance of El Nino and La Nina. So there are two natural climate phenomena occurring across the tropical Pacific Ocean and influence the weather condition all over the world, not in our country. So normal condition में क्या होता है, surface low pressure developed होती है in the region of northern Australia
एंड इंडोनेशिया, एंड वो जो आपका प्रेशर सिस्टम होता है दैट इज ओवर द कोस्ट ऑफ पेरू विच इज समवेयर लोकेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया विच वी हैड सीन द मैप. सो द ट्रेड विंड्स जो होती है ओवर द पैसिफिक ओशन मूव स्ट्रांगली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. So the easterly flow होता है trade winds का, that is carries, trade wind means nothing we can say is a warm water, sorry warm air, that is not a trade wind, जो carry करती है आपके साथ moistures को भी अपने साथ, that is known to be a trade wind. In simple language में समझने की कोशिश करें तो, so trade winds carries warm surface water westward bringing convective storms, thunderstorms to Indonesia and coastal Australia along the coast of Peru. सो जो इसके वजह से क्या होता है, जो कोल्ड बॉटम होता है, कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स होता है, दैट इज वेल्स अप इन द सरफेस टू रिप्लेस द वार्म वाटर दैट इज पुल टू द वेस्ट. इफ यू सी इन दिस आर्टिकल इट हैज क्वाइट क्लियरली मेंशन हियर, सर इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ कोल्डर देन नॉर्मल विंटर थैंक्स टू द नॉर्थ साउथ विंटर फ्लो सेट अप बाय द क्लाइमेट फिनोमेना नोन एज ला नीना. सो El Nino is, we can say, a warm water spreading from west to east in the equatorial Pacific Ocean. And we can say La Nina occurs when the band of water is spread east-west and it is cooler. That is just opposite is, we can say, La Nina. So however in La Nina year the tropical Pacific Ocean soaks up heat and accumulates warm water during the El Nino, and this water spills from the western part of the Pacific Ocean to the eastern part. So Earth has had 3 straight La Nina years, which means the Pacific warm water volume is fully loaded with likely to birth of El Nino soon. So what will happen to cyclone formation and monsoon? So in short we can see the transitions होती हैं from La Nina waters to an El Nino summers historically tends to produce large monsoon deficit on the order to 15%, right? So this is the crux of the article. Next move to the next one. Here we can see that how the trade winds moved from a strong trade wind, the direction equatorial current is strong, and that parts here we can cooler water, and this high pressure created that places normally the trade winds and strong equatorial current flow towards the west, and at the same time sorry at the same time an intense Peruvian current caused upwelling of cold water along the west coast of South America, right? Now here is the next article is talking about dark energy from supermassive black holes. Here new atlas is, we can say, and what is a dark energy? First we need to understand what is, as we know, the composition of the universe. Dark matter is 27%, dark energy 68%, and ordinary matter that is made of 5%. So we have to understand first that what is dark energy is. So dark matter and dark energy. Dark matter attract the whole galaxies together. Galaxy, which is, we can say, as we know, the basic points is dark energy represents the cause of expansion of our universe, and this is also the Big Bang theory also proven that. So despite both components being invisible, जो डार्क मैटर्स होती है, since its existence was suggested in early 1920s, while dark energy was not discovered until 1998. So dark energy की बात करें तो Big Bang occurred nearly 15 billion years ago and expanded. So earlier astronomers believed that eventually the expansion of the universe will slow down because of gravity and it will collapse. However, data from the Hubble telescope suggested that universe expansion is accelerating. फिर बाद में इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने थियोराइज किया कि जो फास्टर एक्सपेंशन है रेट है ड्यू टू मिस्टीरियस डार्क फोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज पुलिंग गैलेक्सीज अपार्ट. सो द टर्म डार्क इज यूज्ड टू डिनोट द अननोन, राइट? नाउ द इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विस, सो इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विच इज कॉल्ड यूपीआई. जो अब यूपीआई है दैट इज अ फुल फॉर्म इज यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस. So India का UPI जो है and Singapore Pay Now were officially connected on Tuesday and allowing the real-time payment link, which is called RTPM, which is called real-time payment link. So the launch was led by a phone call between Prime Minister Modi and Singapore counterpart Lee Hsien Loong. अब यहाँ पे समझना होगा कि what is UPI. देखो, एक है यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI. So NPCI of India had decided not to block funds for cryptocurrency trade. ये तो न्यूज़ में आप इसको समझने की कोशिश करते हैं.
जो NPCI है हमारे इंडिया में, ये UPI को जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करने की एजेंसी है NPCI। इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आती है? पहला आता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC, नेशनल फाइनेंशियल स्विच UPI, भारत के बिल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, जो आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हो, कैश एंड ऑल, एंड वी कैन से आधार पेमेंट ब्रिज APB, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, and we can say national automatic clearing house which is called NACH, and रुपे कार्ड्स। ये सारे को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है? NPCI है, विच इज कॉल्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो NPCI है क्या है? एक तरह से आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी हमारे ATM है इंडिया में उसको मर्ज करने का, लिंक करने का काम भी कौन करता है? हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड NPCI. So NPCI is an umbrella organization to operating retail payments and settlement system under the point partnership of Reserve Bank of India, like and Bank Association which is called IBA. इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी? इसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया था। देखो, जो आपकी बैंक्स होती है ना, उसको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश नहीं करते, उसको RBI एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश करते हैं। जैसे आपके NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसको भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती है, बैंकिंग के एक्ट के अकॉर्डिंग उसको स्टैब्लिश नहीं करते हैं, राइट। ओरिजिन इट वाज नॉट सेट अप फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजन फॉर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, और कंपनी एक्ट 2013 में इसको स्टैब्लिश ओरिजिन हुई थी। प्रमोटर्स क्या है इसके? प्रमोट करने के लिए इसके 10 कोर प्रमोटर बैंकर्स NPCI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC हांगकांग शंघाई बैंक। हांगकांग शंघाई बैंक ऐसी बैंक है इंडिया में जिसने कि फर्स्ट टाइम ATM को लॉन्च किया था हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। चलो, UPI क्या होता है? इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, राइट। IMPS, राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस टू मेक कैशलेस पेमेंट फास्टर, easier and smoother. So we can say UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application and merging several bank features, seamless fund routing and merchant payment into one hood. So UPI is currently the bigger among the National Payment Corporation of India. So that including NACH, which is National Automated Clearing House, IMPS, Immediate Payment Service, Aadhaar Enabled Payment Service, and Bharat Bill Payment System and RuPay. तो टॉप UPI एप्स जो हैं, दैट इज इंक्लूडिंग फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, भीम, द लेटर बिंग आर गवर्नमेंट ऑफरिंग। इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारे पास बैठा है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो 2013 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि कंपनी एक्ट 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956, and with an intention to provide infrastructure to the entire banking system in India for the physical as well as electronic payment settlement system. Australia to host its first Malabar naval drill this August. So Australia will host the Malabar multilateral naval exercise consisting of India, Australia, Japan and US for the first time this year. It means that somehow we are talking about the 4 nation क्वाड के बारे में बात करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्वाड के बारे में बात करें। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स में भी 4 नेशन है यहाँ पे, देखो। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स में 4 नेशन है, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये चारों नेशन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। एंड वाइट इज क्वाड? दिस इज क्वाड्रिलेटरल 4 टाइप से। देखो यहाँ पे अपना है प्यारा देश भारत, इंडिया, एंड हियर इज USA, and in this part is equator, we can see part of Indian Ocean. So India, Australia, USA and Japan. देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे, that's why it's known to be a quadrilateral security dialogue, quad. बट एग्जाम में पूछते हैं कि इसमें क्वाड में कितने नेशन है। इसको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक से भी, ऐसे भी इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर मैप यू कैन इजीली लर्न इट, और नहीं है तो कोई इशू नहीं है। U स्टैंड फॉर USA, A स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, U फॉर USA। 2 नेशन तो ऐसे हो गए, एक इंडिया है, एंड थर्ड आपको 4th याद रखनी, जापान है। दैट्स इट। चलो, सो क्वाड के बारे में आई टोल्ड यू अबाउट दिस इज अ 4 नेशन अलायंस ऑफ इंडिया
Australia, US and Japan, which was established in 2007. So it is often dubbed as Asian or mini NATO. इसको mini NATO भी कहते हैं, North Atlantic Treaty Organization, and it is viewed as a counterbalance to China military and economic clout in Indo-Pacific region. 2020 में US चाइना की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन हुई थी दैट शो चाइना ग्रोइंग पावर प्रोजेक्शन अलॉन्ग विद इंडियन ओशियन रिम. इसके लिए हमने क्वाड को एस्टैब्लिश किया. सो द क्वाड विच यूज टू नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग is not known for the quadrilateral framework that to indicate has gone beyond the narrow security dialogue. इसकी evolutions 14 years ago हुई थी. जो शिंजो आबे थे उनका बहुत बड़ा contribution था. ये शिंजो आबे जो जापान के वही हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनको की assassinate किया गया था. ठीक है. So Shinzo Abe again floated the concept of Asia Democratic Security Diamond involving Australia, India, Japan and USA to safeguard the maritime commons from the Indian Ocean to the Western Pacific. और नवंबर 2017 में इंडिया एंड यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान गिव शेप टू द लॉन्ग पेंडिंग क्वाड कोएलिशन टू डेवलप अ न्यू स्ट्रैटेजी टू कीप द क्रिटिकल सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में. सो यहाँ पे अगर पार्टिसिपेशन देखें मालाबार एक्सरसाइज में 2022 में भी जितने भी क्वाड नेशन थे हमारे जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए टुक पार्ट इन मालाबार एक्सरसाइज. So Malabar exercise is an annual trilateral naval exercise between navies of India, Japan and US, which is held alternately in the Indian and Pacific Ocean. Next is children have the right to protect their genetic data. Supreme Court ने तो child should not be lost in search of paternity और ये top court ने ये चीज़ information दी. The Supreme Court was held in the judgment in children cannot be mechanically subjected to DNA test in each and every case between wedding parents as a shortcut to establish proof of identity. And basically genetic information is personal and intimate. So यहाँ पे Justice V. Subramaniam and V. Nagetran observe a judgment. It shed light on the person's very essence. Justice Nagetran ने ये भी ड्रू किया attention to right to privacy also, which is enshrined in Article 21 of the Constitution. It's the right to privacy. Article 21 of the Constitution. So it's talking about privacy, autonomy and identity recognized under also UNCRC. What is UNCRC? Is United Nations Convention on the Rights of the Child, right? Now moving to the next, Uttarakhand starts a चार धाम यात्रा preparation. Nothing need to be understand इसमें क्या है, इसमें आपको बस ये चीज़ समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यहाँ पे जो BRO इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड जो ऑर्गेनाइजेशंस है टीम दैट विल आल्सो सेट अप अ कैंप इन जोशीमठ टू रिस्पॉन्ड ऑफ एनी अलर्ट ऑफ अदर इमरजेंसीज ऑल्सो. तो यहाँ पे चार धाम यात्रा स्टार्ट की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, और आपको बाकी चीज़ें इसमें नहीं समझनी है, उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, एंड दैट्स ऑल. Russia suspended the last remaining major nuclear treaty with the US. Obviously, the reason war is going on Russia and Ukraine. And Russia के जो president Vladimir Putin, that is उन्होंने मॉस्को में suspend किया his participation in the New START treaty. Right, so nuclear arm control pact with the US, and that is sharply upping the ante of tension with the Washington over the fight in Ukraine. सो यहाँ पे आपको बहुत डेप्थ में चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे कि इसमें पुतिन ने क्या क्या चीज़ें अंटिल अनलेस जब तक कोई आउटकम नहीं आता उसको न्यूज़ को मत देखो. सारे न्यूज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट नहीं होते. आपको वो चीज़ें देखनी है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. आपको स्टार्ट ट्रीटी के बारे में बस ये याद रखो, इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे एग्जाम में. स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है, जो इसमें मैंशन की हुई है. अब यू कैन सी इट हियर, स्टार्ट ट्रीटी, इसके बारे में आपको याद रखनी होनी चाहिए कि स्टार्ट ट्रीटी क्या है. स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी is entered into force on 5th February 2011. It continues the bipartisan process of variably reducing US and Russian strategic nuclear arsenal by limiting both sides of 700 strategic launchers. And why Russia suspended the inspection? Because it is difficult for Russia to carry out inspection to American soil due to Western sanction, including the closure of airspace for Russian planes and visa restrictions. Defense and tech के articles we have already discussed कर चुके हैं at the beginning of the session, that the India's US initiative that is on critical and emerging technologies could have a transformative impact on the bilateral relations.
केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज वर्चुअल सर्वे। तो वर्चुअल के ऊपर यहाँ पे द केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे काउंटर पार्ट किया। इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज preparing to organize the first synchronized vulture survey in select region of the Western Ghat on 24, 25th and 26th. So February 24, 25 and 26 को ये केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका ऑर्गेनाइज करेगी फर्स्ट सिंक्रोनाइज वर्चर सर्वे। बिकॉज ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? बिकॉज यू नो वर्चर फेस्ड अ कैटास्ट्रॉफिक पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यूरिंग द almost year of 2001 and 2000 when the species was exposed to the anti-inflammatory drug diclofenac। तो डाइक्लोफिनेक जो है दैट इज यूज्ड फॉर पेन किलर फॉर द कैटल, और उस कैटल को खाता कौन था? उसको वल्चर। तो इसलिए वल्चर की पॉपुलेशंस बहुत कम हो गई। ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी जितने भी यहाँ पे वल्चर की स्पीशीज़ हैं वो सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एज वी कैन सी जो IUCN स्टेटस है दैट इज इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड है इससे। तो वल्चर से नुकसान किया है, जो आपके यहाँ पे जितने भी मरे हुए उसके एनिमल्स के मीट होते हैं वो खाने वाला कौन था? वो वल्चर ही था। तो उससे उसकी क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो बहुत पावरफुल होती है, HCl। सो ऑब्वियस सी बात है अगर ये नहीं होंगे अर्थ पे तो उससे क्या होगा? ये गैसेस फैलने शुरू हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज है धर्मागार्जन, बस ये याद रखनी है। ये PIB के वेबसाइट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई ऑलरेडी। प्रॉब्लम विद डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस बिल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ने ड्राफ्ट किया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ को दैट मस्ट सेफ गार्ड एंड बैलेंस पीपल राइट टू प्रिवेसी एंड देयर right to information which are fundamental rights flowing from the constitution। तो ये चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड दिस बिल मस्ट बी पुट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिगोरियस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन एंड रीड्राफ्ट बिफोर इट मेक्स इट वे इन टू पार्लियामेंट। एंड नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Here is very first question. Re-aim 2023 sometimes mentioned in the news is related to what? Climate change, global terrorism, global governance, artificial intelligence. Cheshta, D option, yes, it is an artificial intelligence. Very well done, guy. Well done, Cheshta. So, world first global summit on responsible AI in the military kicks on the Netherlands, and Re-aim 2023 brings together government cooperation, academia, startups, and civil societies to raise awareness, discuss issue, and possibly agree on common principle for deploying and using AI in armed conflict. So, here to the next one. Dharmagajan is a bilateral military exercise between India and which country? अभी just we have done, आपको मैंने अभी लोगो भी दिखाई थी the newspaper analysis, which country? C option, yes, Japan is the right answer. Yes. So the fourth edition of India-Japan bilateral army exercise Dharmagajan began at Camp Imazu in Shinga province, Japan, and will go till March 2nd. Marks 70 years of diplomatic relation between the two countries. The annual training exercise. Windfall tax is. Ishita, C is an absolutely correct answer. Windfall tax क्या हो सकता है इसमें? A option, B option, C and D. So the answer will be here option B, yes. So India imposed windfall tax. A windfall tax, the higher tax rate on certain big profit levied on particular company or industry. So
that we can say that the windfall tax में आप जब कंपनी जिस पर्पस के लिए नहीं बनी है और फिर भी वो टैक्स गेन करना चाहती है, बी इज द राइट आंसर इशिता. सो windfall tax is a higher tax rate है, so sudden big profit levy on a particular company or industry के लिए. And fourth one, which principle among the following was added to directive principle of state policy by 42nd amendment to the constitution? Equal pay for equal work for both men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human condition of work to workers. B is the right answer. So 42nd amendment added new directive principle like Article 39, 43A, 48A and Article 43A that deals with the participation of workers in the management of industries, right? And here we reach to the last questions, like here e-Gram Swaraj portal that has to be launched by, here's the 4 option is given. Ministry of Rural Development, Niti Aayog, which is National Institution for Transforming India, Ministry of Panchayati Raj, and Ministry of Information and Broadcasting. Try to attempt the questions answer, so that will gives you the immense idea like what kind of question that can be framed in your exam. And here the name itself will tell you the answer. Sometimes the questions itself will tell you the answer. Here is Gram Swaraj. So Gram which means village, right? So Ministry of Panchayati Raj would be the right answer. So e-Gram Swaraj portal and mobile app that is launched by Ministry of Panchayati Raj that will provide the Gram Panchayat will single interface to prepare the implement their Gram Panchayat Development Plan GPDP. And government are strengthening the rural economy, so that's why the rural economy will impact on the district as well as a state, and a state will impact the country, and our country will be too much prosperous. So the portal will ensure real-time monitoring and accountability. So here is the session, dear student, and I hope you enjoyed the session a lot. Thank you so much Cheshta and Nishita to joining with us. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned, we'll meet you tomorrow at the same time. Till then, thank you so much for joining with us once again. Apna ख्याल रखें, सुरक्षित रहें. Thank you so much. Bye bye and take care once again.